So hello everyone. At this class I'm going to start a new chapter that is called complex numbers. Okay. So in the last class I have completed the part relations and functions. So today I'm going to discuss about complex numbers. So ये complex number का definition जानने के लिए पहले मुझे imaginary number क्या है वो जानना पड़ेगा. Okay. Before going to give the definition of complex number, first I want to discuss about the imaginary numbers. What do you mean by imaginary numbers? The square root of a given of a negative. If the square root of a number is negative, then such type of number is called imaginary number. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्चुअली इमेजिनरी नंबर का भी कुछ पार्ट होता है, तो इसीलिए पहले मैं इमेजिनरी नंबर के बात बता रहा हूं. ठीक है. सो इमेजिनरी नंबर मीन्स व्हाट? इफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज नेगेटिव, then such number is called an imaginary number. That is, for example, look at the example: under root minus 1, root over minus 2, root minus 5, etc. These are imaginary numbers because root over के अंदर negative values है. root over के अंदर अगर negative values होगा तो then those numbers are called always imaginary numbers. Okay. Here we denote this under root minus 1. Listen, we denote this under root minus 1. We denote this under root minus 1 by a Greek letter I, small letter I. This I is called iota. I का full form मतलब है iota. Okay. This root over minus 1 is generally denoted by the Greek letter I, which is called iota. Okay, so therefore we can say that I is equal to root over minus 1. I का वैल्यू root over minus 1 होता है. ठीक है. I for imaginary number. क्योंकि मैं अभी imaginary number का definition दे रहा हूं, तो इसीलिए imaginary number को कैसे denote किया जाता है, क्या है imaginary number, that those things I am discussing now. Okay. So if the square root of a given number is negative, then such type of numbers are called imaginary numbers. For example, under root minus 1, under root minus 2, under root minus 5, etc. And here root over minus 1 is denoted by the Greek letter I, which is called iota. Therefore, we can say that I is equal to root minus 1. Yes, I is equal to root minus 1. So, अगर I का वैल्यू root over minus 1 है तो I square का वैल्यू क्या हो जाएगा? Squaring on both sides, you will get the result. So the value of I square is minus 1. याद रखना पड़ेगा. ठीक है. I का वैल्यू, I square का वैल्यू, I cube का वैल्यू, even I to the power 4 का वैल्यू. Okay. So if you know the value of I square and I, then you can find out the value of I cube also. Look at here how to find the value of I cube. I cube can be written as I square into I. Yes. The value of I square is minus 1. And I is I only, so that is equal to minus I. So the value of I cube is minus I. The value of I cube is minus I. Therefore the value of I to the power 4, तो फिर क्या होगा? I to the power 4 can be written as I square whole square, or else we can write I square into I square also. Okay, you can write this I to the power 4 like I square into I square or I to the power 2 whole square. So what is the value of I square? The value of I square is minus 1. So minus 1 whole square, this is equal to 1. Okay, so these are the values of I square, I cube and I to the power 4. मैं क्यों इसके बारे में बता रहा हूँ? Because when we solve numericals related to powers of I, then you have to use these values only. So if you know up to I to the power 4, then you can easily determine if the exponent is more than 100 or 200 or 2000, कुछ भी exponent होगा तो you can easily determine the value. Okay, just you have to remember the 4 values. The value of I, which is root over minus 1, that is called imaginary number.
the value of I square is -1, the value of I cube is -I and the value of I to the power 4 is equal to 1. सिर्फ ये 4 वैल्यूज याद रखना है, सिर्फ ये 4 वैल्यूज याद रखना है, क्योंकि जो पावर्स ऑफ आई रिलेटेड क्वेश्चंस है, जनरली वो सब शॉर्ट क्वेश्चंस ही होता है, तो जनरली पावर्स ऑफ आई रिलेटेड क्वेश्चंस में ये सब वैल्यूज यूज किया जाएगा. ओके, सो इफ यू नो दीज 4 वैल्यूज you can easily determine any type of expression, any type of expression. All right, okay, so this is all about your imaginary numbers with examples, right? So let us discuss now few questions. ये जो मैं बोला अभी powers of I related questions कैसा होता है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है. So first I will do one thing here. I'm writing all the values. The value of I is √-1. The value of I square is -1. The value of I cube is -I and the value of I to the power 4 is equal to 1. ये 4 वैल्यूज में साइड में लिख के रखा ताकि अभी जब मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा तो आसानी से हम लोग यहाँ से देख के फिर वैल्यूज लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है. सो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I to the power 998. कैसे निकाला जाएगा? हम लोगों ने तो सिर्फ I to the power 4 तक ही निकाला वैल्यू. तो मैं क्या बोला था, इफ यू नो अप टू I to the power 4 यू कैन डिटरमाइन एनी वैल्यू. कोई भी एक्सपोनेंट होगा तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है. तो देखो, सुनना है कुछ बात, कुछ पॉइंट सुनना है. I to the power 998 को निकालने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि वो एक्सपोनेंट जो है दैट इज इवन और ऑड. द गिवन एक्सपोनेंट इज इवन और ऑड. इफ इट इज इवन, listen, if it is even then just you have to divide that number by 2. Okay, if the exponent is even then just you have to divide that number by 2. Or if it is odd then first make it even then you divide that exponent by 2. ठीक है. जनरली हम लोग 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर इवन हुआ तो एक्सपोनेंट. बेटर 4 से अच्छा है कि बेहतर है कि 2 से डिवाइड करो, बात एक ही होगा. अल्टीमेटली जो सोल्यूशन मिलना चाहिए वही मिलेगा. 4 से डिवाइड करो चाहे या फिर 2 से डिवाइड करो, जो कंफर्टेबल है उसी से डिवाइड कर सकते हो, बट इट शुड बी आइदर 4 और 2. ओके, इफ द एक्सपोनेंट इज इवन देन ओनली यू हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 2 और 4. सो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है. सो I to the power 998, ये 998 को 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो फिर क्या मिलेगा, 549. So I square whole thing to the power 549 we can write 599, sorry 499 sorry, yeah, because 998 is there. Okay, so if I divide this number by 2 then it can be written as I square to the power 499. Yes, so the value of I square we know -1. So -1 to the power now 499. -1 to the power 499 का वैल्यू क्या होगा? 499 is odd number. So since 499 is odd number, therefore the value is -1 only because power is odd. So sign तो change नहीं होगा, negative sign ही रहेगा. Okay, so the value of I to the power 998, the value of I to the power 998 is -1. Alright, so अगर पावर इवन हुआ तो then you can divide the exponent either by 2 or by 4. But if it is odd, let us take another example. Say I to the power 97. तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पावर जो दिया गया है वो ऑड है, 97. So if it is odd, if the exponent is odd, then first make it even. So 97 can be written as I to the power 96 into I. Yes, I to the power 96 into I. So I to the power 96 अभी पावर इवन हो गया. Yes, first you make it even, then you divide the number by either 4 or 2. So let us divide this number by 2 again. So if I divide this 96 by 2, it will be I square whole thing to the power 48 into I. Yes, the value of I square we know -1. So -1 to the power 48 is 1. 1 into I, that is equal to I. So this is the value of I to the power 97. ठीक है, तो मैं इवन एक्सपोनेंट और ऑड एक्सपोनेंट का दोनों का ही एग्जांपल दे दिया. ओके, I to the power 998 is even, I to the power 97 is odd.
तो इवन होने से क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 से, नहीं तो 4 से. बट इफ द एक्सपोनेंट इज ऑड देन फर्स्ट यू मेक इट इवन एंड देन यू डिवाइड द नंबर बाय आइदर 2 और 4. ऑलराइट, तो ये हो गया इंडिविजुअल डाटा. इंडिविजुअल वैल्यूज देने से कैसे निकाला जाएगा. ऑलराइट, अगर एक साथ 3-4 ग्रुप एक साथ दे देगा तो क्या कैसे निकालना है. देखो, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का कभी कभी पूछा जा सकता है, या ये सब क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, तो ये सब का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है. सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. I to the power 107 plus I to the power 112 plus I to the power 117 plus I to the power 122. Find out the value of this expression. इसमें सब इमेजिनरी टर्म्स है ना. I for imaginary only, so I to the power 107, I to the power 112, 117 and 122. So if you know how to find the values of the individual data, better you find out the values of the individual data. So 107 जो है, the exponent is odd or even. 107 is odd, so first you make it even. So 107 can be written as 106 into I plus I to the power 112. 112 is even, so since it is even, so you divide that number by 2, so it can be written as I square whole thing to the power 56 plus I to the power 117 can be written as I to the power 116 into I plus I to the power 122 है, तो 122 को अगर 2 से मैं डिवाइड करूँ तो, because this is even number, तो इसको 2 से डिवाइड करने से 61, so I square whole thing to the power 61. Yes, so I to the power 106. Now it is even. Divide this 106 by 2. So this will be then I square whole thing to the power 53 into I plus the value of I square is -1. -1 to the power 56 is 1 only. So write here 1 plus I to the power 16. Now divide this number by 2. If you divide this number by 2, so it will be then I square whole thing to the power 58 into I. And the value of I square again -1. -1 to the power 61. तो 61 तो ये हो जाएगा -1 ही होगा, because power is odd now. Okay, so the value of I square is -1. -1 to the power 53 means -1. -1 into I, that is -I plus 1. I square to the power 58. -1 to the power 58, that is 1. 1 into I, that is I minus 1. So -1 plus 1 plus I minus I will be cancelled. So therefore the value of this imaginary expression is equal to 0. So like this type of question you can expect in your board exam. So since today I have started the part complex numbers, so first of all you have to you should know about the basic things, that is imaginary number क्या होता है, ये सब एक्सप्रेशन का वैल्यूज कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो ये इमेजिनरी एक्सप्रेशन का वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस 4 वैल्यूज, आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई टू द पावर 4. ठीक है, तो चलो ये 4 वैल्यूज याद रखने से हमेशा, ये 4 वैल्यूज याद रखने से ऐसा एक्सप्रेशन का वैल्यूज आराम से फाइंड आउट किया जा सकता है. ठीक है, दिस क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क ओनली, नॉट मोर देन 1. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेजिनरी नंबर. Okay, this is all about imaginary number. Let me discuss one more question और भी clear हो जाएगा. So take one more question. Say 1 plus I whole thing to the power 4 into 1 minus 1 plus 1 by I whole thing to the power 4. This is equal to 16. Proof करने के लिए दिया. Say prove that 1 plus I whole thing to the power 4 into 1 plus 1 by I whole thing to the power 4 is equal to 16. तो प्रूफ करना है. चलो राइट हैंड साइड को रब कर देता हूँ, 16 लाना पड़ेगा. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो 1 प्लस आई होल थिंग टू द पावर 4, इसको कैसे एक्सपांड किया जाएगा. 1 प्लस आई होल थिंग टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज 1 प्लस आई होल स्क्वायर to the power 2 into, look at the second term, 1 plus 1 by I is there. You do one thing, you take LCM, so this will be then I plus 1 divided by I whole thing to the power 4. Alright, so 1 plus I
और else we can do one thing, ये टू दी पावर 4 रखने से ही होगा, क्योंकि मुझे और एक टर्म मिला 1 प्लस आई टू दी पावर 4 ना, 1 प्लस आई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय आई टू दी पावर 4. यस, सो बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, इसीलिए मैं चेंज नहीं किया एक्सपोनेंट को, बिकॉज 1 प्लस आई होल थिंग टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस आई होल थिंग टू दी पावर 4 इज देयर. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस आई होल थिंग टू दी पावर 4. लुक एट हियर, 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 4 क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4 प्लस 4. यस, similarly 1 plus I whole thing to the power 4 can be written as 1 plus I whole thing to the power 4 is there. तो यहाँ पे to the power 4 plus 4 8 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो I to the power 4 है, the value of I to the power 4 we all know which is equal to 1. So 1 plus I whole thing to the power 8, इसको एक्सपांड करना है अभी, 1 plus I whole square to the power 4 लिखने से हो जाएगा. सो a plus b whole square में ब्रेक करने से हो जाएगा, a plus b whole square 1 plus twice I plus I square whole thing to the power 4. The value of I square is minus 1. Minus 1 plus 1 will be cancelled. So twice I whole thing to the power 4. This can be written as 2 to the power 4 into I to the power 4. Yes, the value of 2 to the power 4 is 16. And the value of I to the power 4 is 1. So 16 into 1 that is equal to 16. वही दिया गया था राइट हैंड साइड में. ओके, इट्स वेरी सिंपल. सो जस्ट सिंप्लीफिकेशन इज अप टू यू. ठीक है, यहाँ पे अननेसेसरी 4 को होल स्क्वायर लिखने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वन मोर टर्म इज देयर 1 प्लस आई होल थिंग टू द पावर 4. सो दैट यू मर्ज दिस टू टर्म. इफ यू मर्ज दिस टू टर्म देन यू विल गेट 1 प्लस आई होल थिंग टू द पावर 8. आफ्टर दैट अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, उसके बाद ऑटोमेटिक निकल जाएगा फिर. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Okay, so let us discuss now the definition of complex number. What do you mean by complex number? The number of the form a plus ib, the number of the form a plus ib where a and b are real numbers, where a and b are real numbers, and I is equal to root over minus 1. Just now I have given the definition of I, that is imaginary number. Yes, I is equal to root over minus 1. Then this type of numbers are called complex numbers. So complex number actually क्या है? It is the combination of real and imaginary part. In short, you can give the definition that complex number is the combination of real part and imaginary part. Okay, any number of the form a plus ib, कोई भी नंबर अगर a plus ib फॉर्म में है तो then such type of numbers are called complex numbers, where a and b are real numbers. Real numbers के बारे में तो सबको पता है. Yes, it is the combination of real and imaginary part. तो पहले इसलिए मैं इमेजिनरी पार्ट के बारे में मैं डिस्कस कर लिया. ठीक है, एंड आई, द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1. फॉर एग्जाम्पल से 2 प्लस 5i, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस ib, और यू कैन राइट 3/2 minus 1/2 into i. This is also an example of complex number, because 3/2 and half, these are real numbers only. ठीक है, a और b हमेशा रियल होना चाहिए, और i जो है वो i का वैल्यू तो सबको पता है, दैट इज रूट ओवर माइनस 1, है ना. i फॉर इमेजिनरी पार्ट ओनली. क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, the set of all complex numbers are denoted by Z. The set of all complex numbers are denoted by Z or C. C, or you can write Z also. Alright, the set of all complex numbers are denoted by either Z or C. Okay, that is Z equal to, we can write A plus IB. Yes, if a complex number is denoted by either Z or C, therefore we can write Z equal to A plus IB, because A plus IB तो वो complex number है. Any number of the form A plus IB is called a complex number. So if it is denoted by Z, so clearly we can write Z equal to A plus IB. Okay,
So since z is equal to a plus ib, therefore we can write a is equal to the real part of z, real part of z, or in short you can write re of z. जनरली ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, इतना बड़ा लंबा लाइन नहीं लिखने से भी होगा. A is equal to the real part of z, which is equal to re of z. B is equal to imaginary part of z. B is equal to imaginary part of z, that is im of z. im means imaginary, the short form. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद रखना है. इतना लंबा लाइन एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर में किसी में नहीं देगा. ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z means re of z. Imaginary part of z can be written as im of z. ठीक है, so if z is equal to a plus ib, therefore we can write that a is equal to the real part of z and b is equal to the imaginary part of z. Don't write ib. Don't write ib. You have to write the coefficient of I only. I for imaginary. इसीलिए तो b को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोला जाता है, बिकॉज i के साथ क्या रहता है, a और b. एज पर द डेफिनेशन i के साथ तो b रहता है, तो इसीलिए b को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोला जाता है. एंड द पार्ट विच इज फ्री फ्रॉम i, that part is called the real part of z. So that is why a is called the real part of z. Okay, so if I take one example, say 3 minus 2i, write down the real and imaginary part of this complex number, then what will you write? The real part of this complex number, say z, the real part of z is equal to 3, because 3 is the element which is free from I. तो ये पूरा free from I मतलब उसमें imaginary term नहीं है, तो ये purely real है. So this is real part of z. And minus twice I, देखो I का कोफिशियंट है -2, so therefore the imaginary part of z is equal to -2. Don't write +2. Okay, you have to check the sign also. Use proper sign, because the standard form of a complex number is a plus ib, लेकिन ये एग्जाम्पल में -ib फॉर्म में है, तो मतलब माइनस को इंक्लूड करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2. डोंट राइट +2. ठीक है, सो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन एंड हाउ टू डिनोट द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हिच पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट, व्हिच पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. ये सब कुछ बेसिक चीज है कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, तो आफ्टर दैट नेक्स्ट आई विल डिस्कस अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जहां से क्वेश्चंस आता है. जनरली बोर्ड एग्जाम हो या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, क्वेश्चंस आता है. ठीक है, सो सिंस टुडे ओनली आई हैव स्टार्टेड द कॉम्प्लेक्स नंबर, सो आई शुड नॉट डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट टुडे ओनली. फर्स्ट लेट मी क्लियर द कॉन्सेप्ट बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. प्रॉपर्टी नंबर 1, एक्चुअली बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, इसमें से फ्यू टुडे आई विल डिस्कस ओनली फ्यू प्रॉपर्टीज. राइट, फर्स्ट वन इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी. प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? प्योरली रियल क्या होगा? सी, लुक एट हियर. इफ z equal to a plus ib is a complex number, then the complex number z is said to be purely real. Listen, the complex number z is said to be purely real if the imaginary part of z is equal to 0. अगर इस इमेजिनरी पार्ट z का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो देन ओनली वी कैन से दैट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल. क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में i रहेगा ना, वो तो इमेजिनरी होगा, तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर में i नहीं रहेगा उसी को प्योरली रियल नंबर बोला जाएगा. तो दैट इज व्हाई वी हैव टू पुट इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0. ऑलराइट, से फॉर एग्जांपल z इक्वल टू, इफ आई राइट -5, से whether it is purely real or purely imaginary number.
Simply -5 I have written. There is no I, right? The term which is free from I is called purely real. Okay, so that means clearly we can say that it is purely real number. Okay, next purely imaginary क्या है? It is just the reverse of purely real. Purely imaginary होने के लिए क्या होना चाहिए? Look at here. Z equal to a plus ib, we know it is a complex number. So this complex number is said to be purely imaginary. Purely imaginary if the real part of Z must be equal to 0. अगर real part completely 0 होगा तो then only we can say that this complex number is purely imaginary, which means the value of a must be 0. The value of a must be 0. Then only we can say that the complex number is purely imaginary. Say Z is equal to -5i. This is purely imaginary number because there is no term which is free from I. जो टर्म में I नहीं होता है उसी को रियल बोला जाता है, लेकिन जो टर्म के साथ I होता है उसी को इमेजिनरी टर्म बोला जाता है. सो हियर ओनली वन टर्म इज देयर, दैट इज -5i. I है इसके साथ, so that means we can say that this is purely imaginary number. Okay, so purely real होने के लिए क्या होना चाहिए? The imaginary part must be 0, whereas for purely imaginary the real part must be 0. Okay, so this is the first property. Next property number 2, conjugate of a complex number. Property number 2 में आएगा conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number. Conjugate क्या होता है? Look at here. If Z is equal to a plus ib is a complex number, then the conjugate of this complex number, which is denoted by Z bar. Conjugate होने के लिए उसमें बार देना चाहिए, so which is denoted by Z bar. This is equal to a plus ib whole bar. Yes, conjugate of a complex number means if Z equal to a plus ib is a complex number, then the conjugate of Z, which is denoted by Z bar, that is equal to a plus ib whole bar. Okay, so since I have given one bar, so a plus ib whole bar is equal to a minus ib. Just you need to change the sign of the imaginary part. Listen here, conjugate of a complex number का मतलब है कि जब हम लोग ये complex number के ऊपर एक बार दे देते हैं तब क्या होता है, ये imaginary part का sign change हो जाता है, not the real part. Real part will remain unchanged only. Real part हमेशा unchanged होता है. क्या चेंज होगा? ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा. अगर इमेजिनरी पार्ट में पॉजिटिव साइन प्लस साइन है तो इट विल बिकम नेगेटिव. अगर इमेजिनरी में पहले से ही नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव. ओके, रिवर्स हो जाएगा, जो साइन होगा उसका रिवर्स हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक सम एग्जांपल. राइट डाउन द कॉन्जुगेट ऑफ 9 minus 3i. व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ 9 minus 3i? सो द कॉन्जुगेट ऑफ 9 minus 3i इज 9 plus 3i. Only we need to change the sign of the imaginary. So if I write down the conjugate of -9 plus 3i. -9 plus 3i का conjugate क्या लिखना पड़ेगा? -9 plus 3i का conjugate होगा -9 minus 3i. Okay, no need to change the sign of the real part. Only you have to change the sign of the imaginary. Let me take one more example. Write down the conjugate of -7. Write down the conjugate of -7. तो conjugate of -7 क्या होगा? This is equal to -7 only. Don't write +7. Why? Because this -7 is free from I. तो मतलब ये प्योरली रियल नंबर है -7. तो रियल नंबर का साइन कभी भी चेंज नहीं होता है. You can check here. There will be no change in the real part of the टर्म. ओके, रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं है. जो कुछ चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज करना है. ऑलराइट, सो द कॉन्जुगेट ऑफ -7 विल बी -7 ओनली. डोंट राइट +7. बट इफ आई राइट से द कॉन्जुगेट ऑफ -7i, देन दिस विल बिकम 7i ओनली. ओके, बिकॉज इसके साथ i है, जो टर्म के साथ i होगा
उसी का साइन ही चेंज करना है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, देयर विल बी नो चेंज इन द रियल पार्ट, ओके। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट द थर्ड वन इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस के बारे में तो सबको पता है, लास्ट क्लास में भी कुछ रिलेशंस फंक्शन का क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। मॉडुलस मींस व्हाट एक्चुअली? एब्सोल्यूट फंक्शन। मॉडुलस मींस एब्सोल्यूट फंक्शन, ऑलराइट। सो मॉडुलस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मॉडुलस कैसे निकाला जाता है? लिसन, इफ z is equal to a plus ib is a complex number, if z is equal to a plus ib is a complex number, then modulus of z, which is denoted by this symbol, सबको पता है modulus means two parallel lines, modulus of z is equal to root over, look at here, a square plus b square. This must be always greater than 0. Modulus cannot be negative, that is why the value of mod z must be always greater than 0. When we discuss numericals, at that time you can check the values which we are getting is always positive, okay. So modulus of a complex number का meaning क्या है? If z equal to a plus ib is a complex number, then the modulus of z, which is denoted by mod z, this is equal to under root a square plus b square, and that value must be always greater than 0, ठीक है। So if I take one example, say z is equal to minus 5 plus 3i, write down the modulus of this complex number. Then how can we write? Modulus of z is equal to under root a square plus b square. A means the real part of z, so here the real part of z is minus 5, so minus 5 whole square plus b square. B is the imaginary part of z, this is 3 square, so 5 square, that is 25 plus 9 root over 34. Look at here the value, this value is always greater than 0. मॉडुलस में सबको पता है एब्सोल्यूट वैल्यू, सो वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ओके। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑलराइट। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज मैं अभी दे रहा हूं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट द फोर्थ वन, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Equality of complex numbers. Suppose z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2. Two complex numbers are given. Equality of a complex number means there must be two complex number. नहीं तो बीच में कैसे इक्वल साइन दे के कंपेयर करो या फिर इक्वेट करो, है ना। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो चाहिए, क्योंकि इक्वेट करना है ना, ओके। सो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? सपोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर देयर, z1 and z2. So these two complex numbers are said to be equal, that is z1 is equal to z2 if and only if a1 plus ib1 is equal to a2 plus ib2. That is, if I equate the real part, a1 equal to a2 आएगा, and if I equate the imaginary part, b1 must be equal to b2. This is the condition for equality. If the values of a1 and a2 are same, also the values of b1 and b2 are same, then only we can say that these two complex numbers are equal. Equality of a complex number means z1 equal to z2 कब होगा? When z1 is equal to z2, if a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2, then only we can say that the two complex numbers are equal, okay. मतलब रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट इक्वेट करना है और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट, okay. So this is all about equality of complex number. Let us take one example. So if the question is, if twice y plus 3x minus y whole into I, which is equal to 5 minus 2i, then find x and y. Find the values of x and y.
ये दिया गया है, x और y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? बीच में क्या साइन है? इक्वल साइन है। So which means we can say that these two numbers, these two complex numbers are equal as per the question. Since in between the two complex number here equal sign is there, so clearly we can say that these two complex numbers are equal. So since these two complex numbers are equal, which means we can equate the real parts as well as we can equate the imaginary part also to determine the values of x and y. So now equate the real part and imaginary part. Which one is the real part on left hand side? Twice y. And which one is the real part of right hand side? 5. So twice y is equal to, चलो 5 मिल गया. Therefore y is equal to, मुझे मिला 5/2. Now equate the imaginary part. 3x minus y is the imaginary part on left hand side, whereas minus 2 is the imaginary part on right hand side. Don't write I, because I का coefficient लिखना पड़ता है. Whenever you are asked to write the imaginary part, you just write the coefficient of I. Okay, so 3x minus y equal to minus 2. अभी यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा? Just you first you put the value of y here. So 3x minus 5/2 is equal to minus 2. That is 3x is equal to minus 2 plus 5/2. 2 2s are 4, minus 4 plus 5/2, which is equal to 1/2. Therefore, x is equal to 1/6. Look at the values. The value of y is equal to 5/2 and the value of x is equal to 1/6. वही क्वेश्चन में पूछा गया था. Find the values of x and y. All right. So these are the 4 properties today I have discussed. In the next class I will continue the same. Properties बहुत है, कुछ properties का proof भी चाहिए, वो सब भी देना पड़ेगा. ठीक है? So today I have discussed only the 4 properties. Purely imaginary, purely real complex number. Number 2, conjugate of a complex number. Number 3, modulus of a complex number. And the number 4 is equality of a complex number. So I will continue the same properties, next properties in the next class. Okay, so thank you for today.